ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अभ्यास षष्टि अभ्यास अद्यतनविषयः। अद्य विषयः अस्ति अस्माकं षष्टि अभ्यास। संस्कृत बनाओ। No, when you said that, I was almost, prompted to say, Akash ji samichinam. Very good. पृष्ठ क्रमाङ्कः 13 संस्कृत बनाओ द्वौ। नंबर 2 वे पुस्तक पढ़े। सुंदर जी वदतु वे पुस्तक पढ़े। It's वह पुस्तक पढ़े, right? हाँ वह पुस्तक। स पुस्तकं पठतु और should we use अध्येतु? पठतु। सः अथवा स किमस्ति? स किमर्थं? किमर्थं? You last time we looked at both as possible. Yes. To be used simultaneously. Before either one. Before a word beginning with a consonant, saha becomes sa. Visarga lopah. Visarga lopah bhavati. Saha iti sa bhavati. Sa bhavati. Okay. Before पृष्ठ क्रमाङ्कः 6 व्यञ्जनात् परे। व्यञ्जनात् पूर्वे व्यञ्जनशब्दात् पूर्वे सः इति विसर्गलोपः भवति। सः स भवति। 6th page on the consonants, whatever consonants there is, स्वर व्यञ्जनात् पूर्वे। Okay. हरि जी, वहाँ गाँव जावे। He goes to the गाँव। वहाँ गाँव जावे। वहाँ means he. He goes to the village. सः ग्रामं गच्छति। जावे is he should go. That yesterday what we discussed. लोट लकार विषय। प्रथम वर्ष एकवचनं। कच्छ। It's there in this one also. गच्छतु। सा ग्रामं गच्छतु। All in the book, so I still forget to see the book. भवानेव वदतु हरि जी। वह फल खावे। वह फल खावे means he should eat. सः fruit. So सः फलं खादतु। समीचीनम् अस्ति। वह पत्ते को छुए। सुंदर जी। स पत्रं स्पर्शतु। वह फल चाहे। सुंदर जी। वह फूल चाहे। स पुष्पम् इच्छतु। वह पत्र लिखे। सुंदर जी भवानेव। स पत्रं लिखतु। स पत्रं लिखतु। समीचीनम्। तू ज्ञान और धन चाह। सुंदर जी वदतु। तू ज्ञान और धन चाह। त्वं ज्ञानं धनं च इच्छा। समीचीनम् अस्ति। हरि जी तू यहाँ आ। त्वं अत्र आगच्छ
आगच्छ। भवानेव वदतु हरिजी, तू वहाँ जा। तुम त्वं त्वम अत्र तत्र। तत्र sorry अत्र तुम तत्र हाँ। या गच्छ गच्छ गच्छ। हाँ, तू असत्य न बोल हरिजी। त्वं त्वम असत्य असत्य नंबर 10 नंबर 10 दशम। त्वम असत्यम हाँ, न वद 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 मा वद। न वद is okay, but in Upanishad of course we have seen in different places ma vada, right? Asatyam ma vada. तू सत्य बोल। त्वं तुम सत्य सत्यम वद वद। सिंपल। वद हाँ, वद वद नॉट वद वद। सुंदर जी भवानेव भवान वदतु। तू भोजन पका। त्वं भोजनं पच। तू सज्जन को दुख न दे। त्वं सज्जनं न तुदतु। हाँ, न तुद, राइट? मा तुद, मा तुद, न तुद। हाँ, मा तुद इज बेटर। मा तुद इज Yeah, बेटर। Matuda is better. Yeah. भवानेव सुंदर जी, तू घर में प्रविष्ट हो। Yeah. त्वं So, Tvam. Okay, now here I had a little doubt. When we say ghar mein, so if we go to the mein vibhakti, should we? So we have to say Tvam grahe. It's a good question, but घर में is the Hindi colloquial version of saying it, right? The conversational version is घर में, but we say griham only. The better word is griham. Graham. Okay, because I was. किमर्थं Because it, संस्कृतभाषायां गृहम् इति वदामः। graham. Okay. So Tvam graham pravisha. प्रविश। भवानेव मैं प्रश्न पूछूं। अहम प्रश्नं पृच्छामि। पृच्छामि पूछूं। पृच्छामि। हाँ, भवानेव सुंदर जी, मैं विद्या पढ़ूं। अहम विद्यां पठामि। भवानेव मैं पत्र लिखूं। अहम पत्रं लिखानि। हरि जी, मैं पुस्तक चाहूं। अहम पुस्तकम इच्छामि। सम्यक समीचीनम। हाँ, मैं फूल छूं। मैं फूल छूं। अहम पुष्पम स्पृशामि। स्पर्शामि। नगर के दोनों ओर जल हैं। सुंदर जी वदतु। नगर के दोनों ओर जल हैं। नगरम अपितः जलम अस्ति। समीचीनम। गांव के चारों ओर वन है। सुंदर जी वदतु। ग्रामं परितः वनं सन्ति। वन अस्ति। वन है। बट वन है। Okay, I thought, it's वनम अस्ति। all over, so therefore it's not plural. It's okay. वनम अस्ति. forest is around, Vanam. right? So forest is all around. वनम अस्ति। Okay. हाँ। अस्ति, correct. हरि जी वदतु। घर की ओर चाओ। घर प्रति गृहम्। गृहं प्रति हाँ। गच्छतु। अच्छा गच्छ जाओ ना, जाइए विल बी। हाँ, भवानेव तो Again here, on the same basis, we won't say grahasya because घर की ओर. हाँ, करेक्ट। गृहं ही वदामः। पर किमर्थं संस्कृतभाषायां गृहम् इति सम्यक् समीचीनं यूसेज् प्रयोगः अस्ति। हिंदी इति भाषायां घर की, घर में इत्यादि
संस्कृतभाषायां प्रयोगः अस्ति घर की जा गृहं भवानेव हरिजी दुर्जनं प्रति धिक्ख हाँ दुर्जनं प्रति धिक्ख भवानेव विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है विद्या के बिना ज्ञानम नहीं होता है विद्या के हाँ। बिना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं सुंदर जी So vidyam vina हाँ। ma jnanam. विद्यां विना ज्ञानं Ma jnanam. ज्ञानं न भवति नहीं होता है ना नहीं होता है डज नॉट हैपन ज्ञानं न भविष्य भवति ज्ञानं न भवति इज बेटर ज्ञानं भविष्य न भविष्यति विल नॉट हैपन डज नॉट हैपन यदि ज्ञानं न भवति Bhavati. इट डज नॉट कम ज्ञानं न आगच्छति ज्ञानं न भवति Okay. ओके हरि जी त्वम् असत्यं न वदतु दे हैव चेंज्ड टू त्वम् असत्यं न वद हाउ विल व्हाट इज अनदर शुद्ध वाक्य now tvam व्हाई त्वं वदतु vada no sorry vadatu is there हाँ so vadatu is the karmani prayoga हाँ yeah okay प्रथम पुरुष Purusha is Prathama Purusha of वदतु फॉर वदतु वुड बी Prathama Purusha will be vadatu हाँ correct vadatu correct so I can change it to kartari is it no त्वं should change to what त्वं असत्यं न वदतु डैश असत्यं न वदतु tvam yuva भवान् bhavan भवान् असत्यं न वदतु bhavan asatya na vadatu because भवान् uses Yeah. प्रथम पुरुष त्वं But गृहे should we say bhavan or should we say sir? sir also is okay but here because they have said त्वं right भवान् is more appropriate but sir is also okay सः न वदतु But suppose no because where we have had sa pustakam patatu we say no okay because here we have said tvam. No, I'm sorry. Okay, so yeah, so okay, so therefore. here Okay, because the fine. meaning should not change right appropriate Yeah, word yeah, is yeah. भवान् Yeah, correct. So, त्वं गृहे प्रविशन्तु त्वं गृहं प्रविश तो अथवा किं भवति शुद्धवाक्ये सुन्दर जी वदतु त्वं गृहे प्रविशन्तु एकशुद्धवाक्य अस्ति त्वं गृहं प्रविश अथवा yeah, so it will be यूयं गृहे प्रविशन्तु. ओके बट अप्रोप्रियेटली त्वं त्वम् इति मध्यमपुरुषः Yeah, त्वम् इति bhavan So, भवान् भवतौ बिकास् भवान् हियर् बहुवचन न प्रविशन्तु इति बहुवचनमस्ति okay भवान् भवन्तौ so it should be भवतं no it should be भवत भवन्तः भवान् भवन्तौ भवन्तः सम भवान् करेक्ट भवन्तु भवन्तः. पेज नंबर 10 दशम भवान् नियम Second. नवम नियम भवान् तृतीय पंक्ति One second. Page 10. One second. Let me just see it once. भवन्तः करेक्ट Get there. भवन्तः इज करेक्ट राइट हरि जी sorry भवन्तः इज करेक्ट Yeah. भवन्तः correct. Yeah. व्हाई भवन्तः. व्हाई इज भवन्तः करेक्ट because we have to use that plural thing करेक्ट बहुवचन प्रयोग Samvadana thing. भवन्तः गृहे गृहं प्रविशन्तु प्रविशन्तु. दुर्जनस्य धिक् they have changed to durjanam dhik we have already seen this we saw this you answer earlier ha kha kha gha
को बहुवचन में बदलो. सुंदर जी भवान वदतु. वह पुस्तक पढ़ें बहुवचन में. वह पुस्तक पढ़ें. सः वह पुस्तक पढ़े. हाँ. So तौ पुस्तके ते. पठतम. बहुवचन ते. बहुवचन ते and बहुवचन also they wanted. They have not asked. बहुवचन में. So ते. Yeah. ते. ते पुस्तकानि. हाँ. Okay. ते पुस्तकानि पठत. But they can read one book like what we are doing. Yeah, but each one of us has our book. Smart. But okay, pustakani, pustakam, pustakani, both are okay. Te patanti. Patan, what is it? Patan? What did you say? Is it patantu, patanti? Yeah, patanti. Patantu. Te pustakani. Patantu. Why patanti? Patantu. Pade, correct, na? patantu. Correct. Patantu. हाँ. सुंदर जी भवान है. वह गांव जावे बहुवचन. वह गांव जावे. ते ग्रामं गच्छन्तु. गच्छन्तु. समीचीनम् अस्ति. हरि जी वह फल खावे बहुवचन में. बहुवचने. सरतौ ते. ते. ते फलं. फलं. खादन्ति. खादन्तु. खादन्तु. Khadantu, because it is still, we are still talking about lot lakara. Page 10-12 it is given. Bhu dhatu bhavatu bhavatam bhavantu. Khadantu. Bhavaneva. Hari ji. Vah patte ko छुए. वह पत्ते को छुए. ते. ते. फलं फले फलं. पत्रम. पत्रम. पत्रम छुआ. स्पर्श. स्पर्शन्तु. स्पर्शन्तु. समीचीनम् अस्ति. हाँ. सुंदर जी वदतु भवान. तू ज्ञान और धन चाह बहुवचने. Okay. So te. त्वम. तू is त्वम. Tu is tvam. So we need bahuvachan of that, isn't it? So yuam. Yuyam. 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 So yuyam. Sorry, which sentence was that? Number 7. Saptama. 11, no. Saptama. 7. 7. Sorry. Yeah. So yuyam jnanam dhanam cha ichantu. इच्छन्तु. समीचीनम् अस्ति. हाँ. हरि जी एकादश. तू सत्य बोल. तुम सत्य. तू is त्वम. हाँ. त्वम. सत्यम. बहुवचने. त्वम बहुवचने. त्वम युवाम युवम. यूयम. हाँ. युवम. सत्यम. सत्यम. बोल is वदन्तु. वदन्तु. समीचीनम्. हाँ. सुंदर जी मैं प्रश्न पूछूं बहुवचने. So avam. वयम. Prashna. बहुवचने. बहुवचन. It's okay. No worry. It's okay. Yeah, it'll come. वयम. हाँ. Vayam, yeah. So, Vayam, Prashnam, and then Prichama. अच्छा. हाँ. समीचीनम्. हाँ. भवानेव. सुंदर जी मैं विद्या पढ़ूं. Vayam, Vidyam, Patama. पठामा. Where will we use Adhyayama? Because they say Padana is It Adhyaya. is correct only, but here they have given patama, so we will do. Okay, adhyayanam is padna, right? So we can do adhyayama. Yeah. Adhyayama is okay. Yeah. That's a good. That's better actually. In fact, because they have given adhyayama. Very nice. Yeah, बहुत समीचीनम्. They use that word, yeah. बहुत सम्यक्. हाँ. हरि जी मैं कुत्र सं 17. 17. That's हाँ. what we are. 17. मैं पत्र लिखूं. वयम. पत्रम. It is not that vayam is fine. It's not that vayam patram likhan. Vayam. Okay. Vayam. उत्तम पुरुष. लिखावः. लिखामा. लिखामा. we'll do one more. इनके पूरे रूप लिखो. गृहम. सुंदर जी गृहम गृहे गृहाणि गृहम गृहे गृहाणि.
After that, Okay, after that it is grihena, grihapyam, grihaihi. And then grihaya, grihabhyam, grihebhyah. अस्तु हरि जी पंचमी और षष्ठी पंचमी षष्ठी च गृहम नपुंसकलिंग पेज 71 It's okay. I come to you for Saptami. Sundarji vadatu Panchami Shashti cha. Okay. So grihat, grihabhyam, grihebhyah, हाँ grihasya, grihasya, grihayoho, grihanam. ग्रहाणाम समीचीनम हाँ गृहे गृहयोः गृहेषु हाँ हे गृह हे गृहे हे गृहाणि हाँ समीचीनम सो गृह जैसे लाइक गृह देयर इज फल ज्ञान पुस्तक पुष्प धन वन गुड आइडिया टू सी ऑल दिस एट यू नो एट आवर लेजर लेटर व्हेन वी कैन हाँ लोट के पूरे रूप लिखो भू धातु सुंदर जी वदतु भू धातु लोट लकारे Lot lakare is bhavatu, bhavatam, bhavantu, bhava, bhavatam, bhavata, bhavani, bhavava, bhavama. सम्यक हरि जी पठ धातु पठतु पठतां पठन्तु पठ पठतं पठता पठानि पठानि is correct पठानि पठावा पठाव पठाम पठाम सम्यक गृह कार्यम इति अस्ति भू पठ धातु इत्यादि लिख गम स्था पादृश्वदिश प्रच Yeah. सिमिलर दे आर ऑल सेम वाक्य बनाओ अभितः सुंदर जी वदतु अभितः Abhitah, vakya banao. So, 1 second, I try this. Okay, so therefore, we said no, the easy one which was there. So, in griham abhitah jalam asti. वंडरफुल बहुत सम्यक हाँ भवान एव सुंदर जी भवान एव वदतु पठतु पठतु Patatu. So, patatu is you. So, therefore, tvam. भवान No, bhavan. Bhavan. भवान पठतु भवान एव Pustakam. हाँ भवान पुस्तकं पठतु सम्यक Bhavan pustakam patatu. हाँ भवान एव सुंदर जी तिष्ठ हाँ. तिष्ठ Huh? तिष्ठ Ishta. तिष्ठ तिष्ठ इच्छा नहीं Tishta. तिष्ठ So, yeah, so therefore, bhavan atra tishtatu. तिष्ठ तिष्ठतु न तिष्ठ Tishta. तिष्ठ So, tishta means, so you have to, no, but you sit there, right? That's हाँ. what we are trying to say. You can say anything using the word tishtha. Tishta. So, so I have to say, you sit. So, okay, it's not coming to my mind at the Tvam moment. tvam tishtha. भवतिष्ठन्ति Tvam tishta. Tishtatu Tvam okay, but tishtha. I want tishtha. तिष्ठा okay Tvam tishtha. My book is asked for tishtha, right? Akarji, I have to go. I have only 5 minutes to get We there. are done. Sorry हाँ, about this. no worries. We are done. Okay. So we went quickly. Om. Yeah, See you tomorrow. we will. We'll see you tomorrow. If Same time. possible, see Abhyasa 7 before coming tomorrow. Okay, so we will quickly finish it tomorrow. Okay, Abhyasa Tomorrow, 7, okay. just go through it, and tomorrow we'll finish it quickly. Okay. Om. Hariji vadatu ubhayataha. Ubhayataha. उदयतः हाँ. Ubhayataha is on both sides. Both sides. Hmm. It's how is it different from Abhitaha. Abhitaha is around. Around. Here in Hindi they have given both are same. Dono or. But Abhitaha you can say Gramam Babhitaha Jalam Asti. Okay. So we can say
मार्गम हाँ गृहमस्ति something like that. Oh, very good. मार्गम् उभयतः गृहमस्ति. गृहाणि सन्ति. That is even better. Houses are there. And one more we'll do. Vada. Satyam Vada. Simple. Okay. Last we'll just do Riktastan Baro and finish today. Abhitaha Jalam. Dash Abhitaha Jalam. Gramam. That's same. That same Gramam Ubhayataha Vanam. Gramam Paritaha Pushpani Santi. Gramam Dik ko. For Dik we say Durjanam Dik. So, Tvam Dash Patha. Tvamatra Patha. Anything you can say. Okay. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati. Om Shanti 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 Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Veda Vibhagini Vyomavadvyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om